We'll be starting the last 7th slot at about 6:30. So you can have a break for 5 minutes and stay here for the last slot. And so we get the final Devaradhana and the Prashadana. So this is some sort of blessing for you all to witness the Lakshana Marchana, Ekadhana Lakshana Marchana. It's really a tough task for us to reach 100,000 mark on a day with the available resources and all. As many of us were really scared about the rally which took place in the city. I don't know whether it's they are in the city. So though with the grace of Ganesha, many of the volunteers they have come and supported us to reach so far with the 86,000 mark. And the 14,000 to go, we have exactly 14 days. We'll be doing the last slot of the Archana with the Deeparadhana. We'll start the Archana at 6:30. As many of you all know, like the Namavali which resides on the Ganesha is in the form of Satsidanandam, Sat-Sit-Anandam, Satchidanandam. Sat means really exists, the eternal heart of the glory. Sat. Sit, your mind, Anandam. Your mind and the glory of Ganesha is connected, then you will feel the Satchidanandam. Sat-Sit-Anandam. Some of the times we are not really happy. Not many times the happier things will happen to you. You can't expect. But if your chit means your mind, the wholeheartedly you surrender yourself to Ganesha, that is chit. Sat is the eternal part. That is the Lord. Sat Sit Anandam. So when you want the extended happy in your life, spiritual is the only way. Many of the great scholars speak about this. Even Albert Einstein at last realized spirituality is the only way to extend the happiness in your life. So it is really hard, as I told you, that spiritual perspective is always very hard to be understood. But we can try. There are simple ways like this. You come and hear, either you can recite or you can listen. Shravanam, Kirtanam. Kirtanam means you are reciting the mantra. Simply you can say Omkaram. Om 4,008 times. See, you see the difference. We never tried anything. Simply say, oh, this all means kind of thing. We should try first. So this is the way of how we practice and how we are going to teach our kids, our younger generation towards the spirituality. First you sit and do this kind of things. Then they will really realize and they will come to the temple. So this is the exact way of doing, the very simple way Archana. I told you many times. The simplest form of the prayer is doing Archana. You come and you recite your Gotra, Nakshatram and your name. It is some sort of announcement towards Almighty Ganesha that I am here. I am looking for this. Kshema Arogyadaabhi Vrutyartam. Kshema means the well-being of my health and all. Kshema Arogyam, health. Abhivrutyartam, some sort of development. As I am sick for last couple of days, I am also doing for the brain. Right? So it's in a way, Kshema Arogyadaabhi Vrutyartam, Ayura Arogyadaabhi Vrutyartam, Ashtaiswaryaabhi Vrutyartam. You know the Ashtaiswarya. Many of us never realized we have the Ashtaiswarya. I can simply say, your kids are your Aishwarya. We don't treat the kids in such way. Even kids, they don't accept that one. Putra Bhagyam, that's one of the Aishwarya.
You see how many IPF centers all over the world. The reason is why they were not gifted. I don't want to do any things for them, but I'm telling to you because it's one of the Aishwarya. We never realize it's happened to me because of Ganapati. Right? I can tell you one real story which happened in this temple way back in 2019. One couple, they came. After 14 years, they are married. They were looking for a baby. They had all the treatments, everything they took. Nothing happened for them. At the year 2021, after the Kumbhabhishekam, they were blessed with the baby. Now they had their second baby. Now they are looking for the third baby. So this much of grace Ganesha is having. Year by year he is giving to you. So but there is a proper time for everything. So this is Ashtaishwaryam. So if the Gurukul says Ashtaishwaryam, we don't know what is Ashtaishwaryam. I have a house, I have a shelter for me. That's even whether it's small or big, it is for me. That's the Aishwaryam. I have a car. I don't want a Mercedes Benz. It's a normal car, it's fine. With the 4 wheels, I can drive the car without any problem. That's fine. That is even Aishwarya. We don't treat like Aishwarya. We think that luxurious things are only Aishwarya. Not like that. We have been given already by Ganesha. You see, both hands, very brave, body, very good, positive mentality. We all have, but we never thought about. Ganesha only blessed us. எங்கள்கிட்ட நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அதை முதல்ல நாம ரியலைஸ் பண்ணாதான் we can give it to others. யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு ஒரு இன்னுரை தானே. It is always very hard for many of us to speak good words with others. It's very hard for us to greet people. So யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு ஒரு இன்னுரை தானே. For all the well-being of the whole universe, I speak good words. Adaru dharma. Dharma means in the sense you don't want to withdraw money and spending in the temple. That's not the exact dharma. That's one of the dharma. Dharma comes from your birth. So you visit today one of your friend's house and talk about the Laksharchana. It was held in the temple. I was there. That's dharma. You are talking about the glory of Ganesha to your friend. You are spreading that glory to someone else. They have never visited this temple. But that is other than dharma. Yavartumam unnum borodu kaipadi. If you have your party, your grandma at your home, you see your party always having the meals. She takes one bunch of sadam and keep it in the corner of the plate or banana leaf. For what? Yavartumam unnum bodu oru kaipadi. That will feed the people all over the world, those who are in need. சாப்பாடு இல்லாமல் மக்கள் இருக்காங்க. அப்போ நாங்கள் இங்கே எடுத்து வைக்கிறது அது சேரும். யாவர்க்குமா உண்ணும் போறது கைப்பிடி. இப்போ எல்லாம் அப்படி செய்யறது இல்லை. தாத்தா பாட்டி அப்பா எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பாருங்க சாப்பிட்றதுக்கு they take one bunch of sadam and leave it there with all curries or dal எல்லாம் இருந்துச்சு. யாவர்க்குமா உண்ணும் போறது கைப்பிடி. யாவர்க்குமா பசுவினுக்கு ஓர் வாயுரை. Offering grass to cow. பசு நீங்கள் பசுவுக்கு புல்லு கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் பால் கொடுக்கும். அந்த புண்ணியம் எல்லாருக்கும் போய் சேரும். யாவர்க்குமா பசுவினுக்கு ஒரு வாயுரை. யாவர்க்குமா பிறர்க்கு ஒரு இன்னுரை தானே அப்படின்னு சொல்றாங்க. These all are the ways of doing the dharma. But we are always thinking of dharma is done by the money. Dharma is done by your positive attitude. தர்மம் என்கிறது இதனால செய்யப்படுவது மனசாரம். தர்மம் தலை காக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார். தலைமுறை காக்கும். If you do it, அதான் நான் காத்தால கூட சொல்லியிருக்கேன். யத் கரோதி சுபம் கர்மம் சுகமேவ பவிஷ்யதி. If you do good, you will get good. யத் கரோதி கரோதி means doing. யத் கரோதி அசுபம். அசுபம் means if you do not good, you will get not good. You will get the bad.
Yat karodi shubham karmam sukham eva bhavishyati. Yat karodi ashubham karmam dukkha eva bhavishyati. When you do harm to any of the creature or any of the human being, that will repeat again. Today or tomorrow, or by tomorrow or next year, you don't know. The same way how dharma repeats to me, it's like the boomerang. Oh, நான் பண்ணக்கூடிய அந்த நல்லது எனக்கு வந்து சேரும், கெட்டது வந்து சேரும். But கெட்டது comes very quickly. That நல்லது. The bad karma comes very quickly. That's the good karma. அப்போ இதை வந்து நாம இது பண்ணணும். The bad cholesterol ஈஸியா வரும். டாக்டர் ஈஸியா. அது மாதிரி இந்த bad cholesterol, good cholesterol வரும். இல்லையா? அது மாதிரி தான் இந்த கர்மா படிக்கிறது தானே cholesterol இருக்குது. It's stored in your vessels, no? Not regular body. அதே தான் அந்த கர்மா, I told you a couple of times. It's stored in your abdomen, the மூலாதாரம். இங்கே தான் கர்மா வந்து இது பண்ணுது, சேரும். அப்போ வயிற்றுல வந்து இந்த கர்மா சேர 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 அதுக்கு நாங்கள் பூஜைகள் அது பண்ணி அந்த we try to reduce the amount of karma. அதனால தான் if you diagnose one doctor, if you go to your GP, for many things they check the இதை பார்த்து வயிற்றை கொண்டு பார்ப்பாங்க. அங்கே தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கு. The problem is there in your abdomen. அடிவயிறு கிட்னி இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள். கர்மாவும் அங்கதான். இது சாஸ்திரம் சொல்றது. சரீரம் கஷேத்திர பிரஸ்தாரம். Our Saivam philosophical perspective, we see one human body is equivalent to the temple. Shariram Kshetra Prastaram, you lay down on the floor. Your feet is the Raja Gopuram. Your foot is the Raja Gopuram. This area, Muladharam, where the Kutipulya resides. Stambam is there. உள்ளம் பெருங்கோயில் உன்னுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தெள்ளக்களித்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம். So where Lord Shiva is தெள்ளக்களித்தார்க்கு, who are pretty clear about their goal, அவங்களுக்கு வந்து சீவன் தான் சிவலிங்கம். அகம் பிரம்மாஸ்மி, that simply say அகம் பிரம்மாஸ்மி. இதுதான் sociology also speaks about, is religious wise, religious perspective also the same. Psychology also speak the same. So, Shariram Kshetra Prastaram. In the Urambe, we should treat this Shariram, this body, like the temple. You see how the temple is very clean. Likewise, we have to treat this body. கண்டதே காலையில் போட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு புசு புசுன்னு வந்து நடக்க முடியாம சில பேர் உட்காந்து எந்திரிக்க முடியாது, எந்திரிக்காம பூஜை பண்றது. we see this much of difficulties. Even at the small age, youngsters, they are very hard to sit on the floor. The காரணம் என்னன்னா, they don't control the emotion, sensation, they don't control their body as well. All the junk foods they have, that will definitely make harm to them, their health. இதெல்லாமே வந்து எங்களுடைய அப்போ எங்களுடைய சமயம் என்றது இட்ஸ் நாட் கிவிங் யூ த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட் கிவ்ஸ் யூ எவ்ரிதிங் வாட் யூ வாண்ட். சோசியாலஜிக்கல் திங்ஸ் எல்லாமே ஹெல்த் வைஸ். இந்த தீர்த்தம் நாம சொல்றோம் இல்லையா, யூ நோ ஹவு மெனி ஆஃப் த ஹெர்ப்ஸ் ஆர் பீயிங் புட் இன் த தீர்த்தம். It's a herbal water actually. Right? If I am a good marketeer, then I will make a pack of it and I will say Kirtam. But no one knows what we put. Pachakalpura, Jadipatri, Nannarive, Vettive, Lamichave. I don't know exactly English names for those. Okay, all very valuable herbs. அதெல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சு, right? When I make this herbal powder, I always have Vaidik Surya Mama because I use his grinder, the mixing. He says, don't take my name. இருந்தாலும் அதை நம்ம செய்து அதை வச்சிருக்கோம். அது நீங்க குடிக்கிறப்போ பாருங்க, அந்த மந்திரம் சொல்லுவாங்க, அகால மிருத்யூகரணம் சர்வவியாதி நிவாரணம். That's a remedy for all the diseases. Akala Mrityukarnam Sarvavyadi Nivaranam. You know the Pachakalpuram is good for your ENT. It's a very good ENT doctor.
ears, throat. சளிதான் எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை. சளிக்கு சொல்லப்பட்ட மருந்து வந்து பச்சை கற்பூரம். பழைய காலத்துலலாம் பாட்டி வந்து பேன்லேயே வெத்தில எடுத்து சூடு பண்ணி அதில் பச்சை கற்பூரத்தை நெஞ்சில் வச்சுருவாங்க. சளி ஆல் கவுன். அப்போ அது இப்போ என்னன்னா இப்போ நம்ம ரிலீஜியஸ்ங்கிறது வந்து சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன். அதே மாதிரி இந்த வெட்டி வேர் வந்து அது வந்து உங்களுடைய நரம்பு மண்டலங்களில் சேரக்கூடிய அழுக்குகளை போக்கக்கூடியது. அப்ப அகால மிருத்யுகரணம். அகால மிருத்யுனா என்னது? கோயிங் இன் பிட்வீன், இடையில போயிருந்தது. 70-80 வயசு வரைக்கும் வாழாம 40-30 கார்டியக் அரெஸ்ட் அது இது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரோக்ன்றாங்க, நிறைய சொல்றாங்க. அது என்னது? அகால மிருத்யுன்னு சொல்லுவாங்க. காலம் வந்து போறது இட்ஸ் ஃபைன், தட்ஸ் நேச்சர். காலம் வந்து போறது இது அகாலம். காலம் வராம போறது அகால மிருத்யு. மிருத்யுனா டெத். comes in improper timing. Akala mrityukaranam. Sarvabhyadi nivaranam. It is a good remedy for all this. Samasta papakshayakaram. Now the spiritual part comes. Akala mrityukaranam, spirituality. Sarvabhyadi nivaranam, medical part. Sarva papakshayakaram, all the sins I made. Shayakaram means which will reduce. Whenever you come and get the tirtham, every time your papam is reduced. Akala mrityukaranam sarvabhyadi nivaranam samasta, the whole sin. Papakshayakaram. Swami snanodakam. What is that? Ganesha. அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய நீர் தான் அது. இவ்வளவு திரவியம் எல்லாம் போட்டு அபிஷேகம். ஸ்நானோதகம். ஸ்நானம்னா காப்பி. ஸ்நானோதகம் பாவனம் பானகம் சுபம். அது இப்படி எடுத்து குடிக்கப்படாது. Right? You have to have your fingers like this and keep a drop of tirtham and have it. It cannot go to your descent. It should vapor in between your throat and your before it goes to your descent. என்ன சொல்லுவா? குடலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அது ஆவியா போடணும். அவ்வளவுதான் குடிக்கணும். போத்தில் கணக்கில் மருந்து எடுத்து குடிக்கப்படாது. மருந்தும் அளவா தான் குடிக்கணும். டாக்டர் எழுதுவார் 5 ml. அதுக்கு மேல குடிச்சா என்ன ஆகும்? They know nothing will happen. It will create another problem. வேற ஏதாவது பிரச்சனை. அதனால தான் அவ பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. This twice a day 5 ml. அது ஏன் அவங்க நம்ம கூட குடிச்சா என்ன ஆகும்? Nothing will happen. வேற ஏதாவது ஆகும். அவ சொல்லக்கூடிய ரெமெடி நடக்காது. அதே மாதிரி தான் அகாலம் சர்வப்யாதி நிவாரணம் சமஸ்த பாவக்ஷயகரம் சுவாமி ஸ்நானோதகம் பாவனம் பானகம் சுபம். அப்ப தீர்த்தத்தை வாங்கிட்டு குடிச்சிட்டு இப்படி பண்ணப்படாது. You get the தீர்த்தம் and touch with your ring finger and bring it, then adapta sprinkle on your head. Some of you do it wrong way. நம்ம இங்க கொடுத்துட்டு அதை பிறகு இங்கே பண்ண. First get the தீர்த்தம் and sprinkle. அதுக்காக அது போய் படுமான்னா அது மந்திரபூர்வமா போகும். Then you have to have it. அந்த மாதிரி தீர்த்தம் நீங்க சாப்பிடணும். So that will purify the whole body, Atmana, Vidya, Shiva. So we will be starting very soon. After a break for the volunteer place, we will be starting the last slot. Thank you very much. So one more slot. I may request you all to have your presence for another 30 minutes. Thank you. Last slide. Sure.
Okay, எல்லாரும் உட்கார்ந்து பாருங்க.
वासो गारे मा गौरी का आवले मा कमलिया मा गौरी देयो भवन सुनी भवाय मा निकाय मा महानाय विरोधमे मा स्वानाय मा सर्वात्मे मा धर्मवात्मे मा मोक्षे मा दुष्टे मा ब्रह्मांड कुंभाय मा इत्यो भवाय मा जिरो भवाय मा जन्म योनिमे तर विदाय मा निकृपदो निकाय मा गेत्रे करदाय मा नादर माय मा दरिद्राय मा साव विदाय मा गिरय मा वाणी निकाय मा वादना निकाय मा गुणाय मा दोमा विग्रह मा दत्रोदाय मा दीर्घोदाय मा प्राण निकाय मा धारकानिकाय मा भूमध्य संस्काय मा विद्यामोदकराय मा यौनावाय मा देवदाय मा नमोदराय मा नेर पिट्टाय मा कुक्कितय जगन्नर जगन्नर मार्ताय मा प्रतिकरे मा त्रिजानय मा दैवर्पे मा ध्यानजन मा प्रदानंग मा मनोदय मा कालामुक्ताय मा त्रयदेव मा ज्योतिर्मंडल लांगराय मा ध्यानाचराय मा कृपा करने का आदाय मा यज्ञेर जनोर्गाय मा ध्यानमेय मा पूजावा निवादाय मा प्रदाने मा गासुदाय मा खंडपाय मा विदने मा पदिने मा दुष्टिने मा दाटिकाय मा स्वजने मा प्रमदाय मा प्रमदेश्वराय मा चिंतामणि प्योमने मा कल्पद्रुम नार्याय मा समंड मध्यताय मा दुर्गादनाय मा दीप्रान भक्ताय मा वादी मौलान मा दांत विष्णु मा भोगना भुजनाय मा दगावदाय नि बेडाय मा पुरद्दुप्यादनाय मा देववती द्रोताय मा जात्या रताय मा सुनादि बेडाय मा सर्वदुप्यां पूजाय मा निपद्रादाय मा वंडिता जाय मा प्रदाय मा गुणप्रदाय प्रदवाटिकाय मा वीने जंगाय मा त्रिजानय मा कुलोर मा प्रमोदराय मा निम्ननाभय मा कुलोक्ये मा विनोक्ये मा मृगत्वजाय मा वीने सुंदर मा कंपोटा नंबनाय मा पुण्यपावदाय मा दुर्गदाय मा महाकवे प्रदने दुप्याय मा पूर्वकरणाय मा निप्रबतनाय मा संपकाकार कृपाकार वर्तमोळे मा जगदाय मा प्रकार गणिताय मा बलिक्यो विनोदय मा प्रकोडे गणकाय मा सर्वक्रेमे कांगय मा प्रगतो रामतार प्रणाजो तन्यकाय मा रत्नाय मा प्रणाय मा समानि मुद्राय मा तेग्राय मा तग्राय मा श्वेताय मा श्वेतां परनक्ताय मा रक्तदागोट बलवाय मा श्वेताय मा श्वेतां प्रदाय मा श्वेतमानि मुद्राय मा वेदांत विद्याय मा वेदयाम गीता भावय पूर्णाय मा सर्वणक्कन किलाय मा भावय रोवाक्याम सर्वदोवादं विदाय मा मंगलम आकर्याम सर्वकांड गाताय मा प्रदेगाय मा साग्नि वीरावुर गदाय मा इक्षुजाय वदाय मा वन्दुन्ने मा दिकवाणि मा गदाय सर्वयुक्तय मा वाक्यं दुतोत्पराय मा साहित्यं गुणय मा तत्तप्तय मा कल्पविदिराय मा विश्वावज देहग्राय मा मद्रिय मा कुमाराग्राय मा ज्ञानं क्रावदय मा क्रावदय मा भूरवाक्य मा कदसमुद्राय मा विदुदाय समोमकाय मा मात्रकराय मा सुदगनिका प्रदेय मा गुणावदय मा उसका रत्तुर्णे गणिपूर्ण नाम विजय मा भारतीय इंद्रिय नादाय विनायक विजय मा महालक्ष्मी समान सुदृढ मनोरमाय मा नमानमेय भूमांगाय विष्णु मा महेन्द्र मुनिवराय मा गाय मा सर्व विजय मा मोदमोद जनाय मा प्रमोद प्रमोदनाय मा क्षमयते तद्वद्दज्ञ मा तद्दि प्रवर्तकाय मा तद्रोमुखि दुखाय मा कांतिकंतरदास्य मा मदनाप्य तदाप्य मा हृदमय मुख्य दुर्मुखाय मा विघ्नं बल्लदो विघ्नं मा गणपति मदद्रमाय मा विघ्नकटिंग जनाय मा द्राविणी तद्दाय दिव्रा प्रसन्ननाय मा द्वारिणी मा नेत्रजय मा मोहिनी मोगनाय मा भोगदाय एकादमंडलाय मा कामणी एकादम कृति मा दिष्ट सुंदराय मा बस्ताय मनोमद मा आदित्य रूपमे मा नमस्ते मौलजय मा तणि रूपमे मा सर्वसुर सुंदरजय मा दोलितेदाय दार्जय मा इदामोदय मा देवेन्द्र दिखाय मा गौणंतराय मा उग्र प्रत्युत्तराय मा ज्ञानानां प्रयोग विजय मा इरावदाय धर्माय वारणावर विजय मा विद्याधर निवाराय मा चंदन मा विजय मा जय मा जय परिवाराय मा विजय मा विजयावगाय मा वंदात्वादा ज्ञात्य वक्ताय मा विलासि गौडाय मा सौंडी नौंदरी वट्टाय मा वंदार दुलाय मा मंगल मंगलाय मा जाति ज्ञानाय व्यासि देवताय मा प्रकाश सुखदाय मा अनंताय मा कामिनी कामनाय मा कामकारिणी कामदाय मा विद्याधर मा गौरी नंदाय मा श्रीजय मा रोक्तदाय मा वाजताय मा वागिदाय मा नरणी कामकाय मा वामरामय जयताय मा रोमय रोक्तिमुद्र बादाभ्यं विजय मा कृतिकाय मा स्वादेन सुराय मा स्वादेन विजयकाय मा अमृतांति कृताय मा जय मा गुणधरो जय मा चित्तकाय मा चित्तकनिकाय मा मकरनायकाय मा सर्वकालिका सुदयन मा चित्तकाय कपराय मा अनपाय मा अनंत दृष्टजय मा अप्रमेय जय मा वैद्यराय मा नावलाय मा पितृदाय मा जुदाय मा वंशाय मा किराय मा यज्ञाय मा प्रियाय मा जय मा अनादाय मा नावजाय मा मनाय मा अमोघस्ते मत्वैराय मा गोराय मा प्रतिमाकाय मा वनाकाराय मा अग्निभोक्ताय मा अव्यक्त लक्षणाय मा आधार विणाय मा आधाराय मा आधार देव विद्याय मा आगमेकदाय मा आशापूर्वकाय मा आगमहारदाय मा क्षुजाग मध्यताय मा इक्षुभक्षण लालदाय मा क्षुजा बालदेगस्य मा क्षुजा पणि जयदाय मा द्रगोम समार्थिय मा तृतीय मा निवृत्त श्यामाय मा मंडल प्रणाम विश्वप्रियाय मा उडावाय मा उडादाम्य इंद्रा प्रियाय स्माग विक्रमतुल्य मा इतिकर्तव्य जयप्रिय ईशानोळय मा ईशानाय मा ईशानदाय मा ईशने मा ईशनात्रिय गणपांताय मा एकामात्र वर्तनाय मा वेद्रा ब्रह्मोळय मा उडेर प्रियाय मा प्रदानाय मा दुःखाय मा उदारदे प्रणीय मा ऊर्जस्पदय मा ऊर्जपदय मा उगापो रात्नाय मा विद्युत जाम पुदय मा स्थिति प्रबद्धकाय मा चित्ते तुलपाय मा नत्रिय मोजनाय मा दुक्तान तुक्ते मा सुरत्ते जाम चित्ते मा विगान जाम चित्ते मा